Hello beautiful people, how are you all? We're taking you to the George Everest today, and it's a famous tourist hotspot in Mussoorie. So we're not going to this route, we're going this way. Let's go. Come on. क्या नेम से इनके? इसका नाम स्वीटी है। ये वाला? व्हाइट वाला? इसका नाम कल। वो पीछे से बात कर रहा है वो, उसका नेम क्या है? पीछे से बात कर रहा है। इसका नाम डब्बू है। डब्बू लग भी रहा है वो। डब्बू बिस्किट चाहिए होंगे। From here we began for a George Everest track. George Everest track is a moderate track which is just 500 meters uphill. It only takes 30 minutes for the summit. Fact about George Everest: the highest mountain on earth named in his honor, which is Mount Everest. George Everest Peak, also called Park Estate, which was built in 1832, the surveyor from East India Company. He was also a geographer. Here we go for it. So guys, we're hiking up to George Everest Peak. So behind this is Rashid and Joy, and you can see them. They're having fun behind the camera. Quite little good to see. सुबह मौसम बहुत अच्छा था, इसलिए हम लोगों ने प्लान किया कि आज जॉर्ज एवरेस्ट कवर करें। रास्ते में आते आते मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग टू शूट ऑफ द डे टुडे, बट एनीवे धूप आ गई है, कोहरा भी है, अच्छा लग रहा है। शूट के लिए जो हमें सनलाइट चाहिए थी वो हमें मिल रही है। और क्या करेंगे आप घर जाके? मैं वाइकिंग्स के एपिसोड खत्म। हाँ, According to Tibetan mythology, the written verses on these flags are Om Mani Padme Hum, and it's a good omen. Okay, so we started from there. That's the starting point for the George Everest track. You all the way hike up from there, and there are small beautiful trails with the flower, and we are just near to this peak, and it's just above our head.
After some Tibetan friends finishes their prayers, we saw a lovely 360 view from the top of this peak. You can see Dehradun, foothills of the Himalayas, Banog Wildlife Sanctuary and Oak Forest. जॉर्ज एवरेस्ट पीक पे पहुंचने के बाद गाइस इधर अंदर पीक पे आप देख सकते हैं प्लास्टिक बॉटल्स, टूटी कांच की बॉटल्स। Seriously hated. हम लोग तो फिर भी बच सकते हैं लेकिन जानवर के लिए कितना खतरनाक है। सो प्लीज इतनी सुंदर जगह पे आने के बाद इतना बुरा काम ना करें। 5 मिनट लगाएंगे हमें साफ करने में इस वीडियो के बाद। चलो, let's clean. इस खूबसूरत चोटी को गंदा करने में कितने घंटे लगे होंगे मुझे नहीं पता, पर हमने 15 मिनट निकाल के इसको जितना हो सके साफ किया। यहाँ इकट्ठा कर दिया टूटी हुई कांच की बॉटल्स, प्लास्टिक के पॉली बैग्स। और क्योंकि हम प्रिपरेशन के साथ नहीं आए थे, सोच कर नहीं आए थे कि इतनी गंदगी यहाँ मिलेगी, तो हैंड्स आर डर्टी। तो उसके बाद हम सैनिटाइजर यूज़ करेंगे। सिर्फ एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ गाइस, जितने लोग ये गंदा करने में बिलीव नहीं करते, प्लीज 15 मिनट निकाल के इसको साफ करने में अपना टाइम लगा दीजिए। थैंक यू सो मच। बोलने देते नहीं यार, तुम मुझे गलत बात नहीं है। वो नहीं हो रहा कैमरामैन नवाब। Hey guys, so we are done for vlog today. Please watch our videos, and if you like our videos, subscribe our channel. Don't forget to press the bell button. Yes.